नमस्सर्वेभ्यः। गतकक्षायाम् अस्माभिः प्रथमः यः श्लोकः वर्तते सः दृष्टः। ततः प्रथमे एव नाम श्लोके अस्माभिः वृत्तं ज्ञातम्। उपजाति इति वृत्तमस्ति, छन्दः अस्ति। तस्य लक्षणं ज्ञातुम् इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्रा एतद्द्वयम् अस्माभिः ज्ञातं। तयोः द्वयोः मिश्रणं यदा भवति तदा उपजाति इति कथ्यते। द्वयोः मिश्रणं नाम कदाचित् तत्र एकस्मिन् पादे इन्द्रवज्रा भविष्यति, पादत्रयम् उपेन्द्रवज्रया, अथवा पादद्वयम् इन्द्रवज्रा, पादद्वयम् उपेन्द्रवज्रा, पादत्रयम् इन्द्रवज्रा, एकं पादम् उपेन्द्रवज्रा इति किमपि मिश्रणं भवितुम् अर्हति। तथा सर्वेषु श्लोकेषु भविष्यति। भवन्तः तथा अभ्यासम् अपि कुर्वन्तु। नाम उपेन्द्रवज्रा कुत्र वर्तते, इन्द्रवज्रा कुत्र वर्तन्ते, प्रथमे पादे, द्वितीये पादे, तृतीये पादे, चतुर्थे पादे, तत्सर्वम् अवगच्छन्तु। एतत् अस्माभिः इन्द्रवज्रायाः in same sloka there is upajati will available. Means in all shlokas there will be upajati. Upajati means what? The mix up of Indravajra as well as Upendravajra. So now there separately there won't be any special shloka like Indravajra, full of Indravajra or full of Upendravajra. There will be mixture. For example, if we identify here th, laghu, guru, laghu. So now wherever there is a laghu, guru, laghu, now that would be Upendravajra. Let's say laghu, guru, laghu. So now on looking at first word, you will understand whether this is Upendravajra or Indravajra. So this one is this pada will be Upendravajra. Then next is this pada starts from, second pada starts from this. So jaya pra. So now guru, guru, laghu. Guru, guru, laghu means what? This would be Indravajra. And again laghu, guru, laghu, it would be Upendravajra. And lastly again laghu, guru, laghu, again here it is Upendravajra. So did you get that? नहीं, हमें तो यही पता था कि पूरा श्लोक एक ही छंद में आता है। हाँ ना, ऐसा होता है, लेकिन कुछ कुछ स्तोत्रों में पूरा का पूरा एक ही छंद यूज करते हैं। कभी कभी मतलब ऐसे भी श्लोक उपजाति भी यूज करते हैं। अभी उपजाति का भी वैसा लक्षण हम देख लेते हैं। नहीं, ऐसा मैं इसीलिए पूछती हूँ कि ऐसा परीक्षार्थी, मानो कि हमें कोई छंद पहचानना हो तो पूरा श्लोक हमें दिया हो तो हमें ये तो मालूम ही नहीं पड़ेगा तुरंत कि ये मिश्र किया हुआ है। हम तो कोई एक छंद का जो बंधारण होता है ना, जैसे इंद्रवज्रा का जो होता है या बनाकर जो सूत्र होता है, सूत्र मानो कि जो यमतारा जबान लगा में से जो भी बनाते हैं, तो हर एक छंद का एक एक ऐसा होता है ना। हाँ नहीं, वो लेकिन वो देते समय पादद्वय अथवा पूरा श्लोक देंगे ना, आपको पूछेंगे तो भी पूरा श्लोक देंगे तो एक तो पूरे श्लोक में 4 पाद, यदि आप पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद ऐसे देख करके वो मात्रा लगा देते हो, रस्व, गुरु वगैरह और लघु गुरु करके, तो आपको पता चल जाता है कि ये इंद्रवज्रा पूरा इंद्रवज्रा है। यदि चारों इसमें इंद्रवज्रा है, लक्षण घटते हैं तो इंद्रवज्रा हो जाएगा। यदि कहीं कहीं मिक्सअप है तो वहां उपजाति कह देंगे हम। जैसे कि मैंने आज तक पता नहीं था क्योंकि हम तो बेसिक ही सीखे थे ना, तो एक ही पता था कि पूरा श्लोक में एक ही छंद आता है। पूरे छंद के लिए ये देखो मैंने कुछ उदाहरण भी वहां रखे हैं। जैसे कि इंद्रवज्रा का हमने रखा है ये वाला उदाहरण,
प्रसिद्ध श्लोक है, लोकाभिरामम रणरंगधीरम। उसमें पहले 3-3 अक्षर भी आपको पता चल गए ना तो भी पूरा वृत्त आपको आ जाएगा। लोकाभि गुरु गुरु लघु, राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, गुरु गुरु लघु। तीसरा गुरु गुरु लघु, रु यद्यपि रस्व दिख रहा है, आगे संयोग होने के कारण गुरु हो गया। श्री राम दूतम शरण, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। देखो ये पूरा का पूरा इंद्र वज्रा का है। हाँ? वैसे ही उपेंद्र वज्रा का एक उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव त्वमेव, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ऐसे ही चारों पादों में है। तो ये पूरा का पूरा उपेंद्र वज्रा है। और उपजाति कब कहलाता है? जब मिश्रण हो जाता है। मिश्रण के लिए वही छंद का लक्षण ही वो बोल रहे हैं। अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातयस्ता, उपजातयस्ताः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। उच्यते पादौ यदि उपजातयः ताः, ताः उपजातयः, उनको उपजाति बोलते हैं जब एक ही मतलब 4 पादों में जब मिश्रणम होता है। मिश्रितासु इत्थम किल अन्यासु अपि मिश्रितासु उपजातयः ताः कथयन्ति स्मरन्ति इति। तो इसमें सारा मिक्सअप होगा। एक पाद उपेंद्र वज्रा का हो सकता है, इंद्र वज्रा का हो सकता है, ऐसे मिक्सअप होगा। उसके लिए भी एक उदाहरण मैंने शायद रखा है ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये उपजाति का है। क्यों? इसमें पहला अक्षर जो है वो गुरु है, लघु है। ये हो गया इंद्र वज्रा। इसमें पहला अक्षर लघु है, दूसरा गुरु है, फिर से लघु है, ये हो गया उपेंद्र वज्रा। श्लोक में ये उपजाति केवल उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा के बीच में ही होगी और छंद भी हो जाए ना, और छंदों में उपेंद्र उपजाति छंद का नाम ही बताता है कि जहाँ अनेक सारे छंदों का मिश्रण है उसको उपजाति कहा था। दो छंद मिक्सअप जब हो जाते, समान अक्षर वाले 2 छंद यदि मिक्सअप हो जाते हैं उसको उपजाति कहेंगे। ठीक है। तो पूरे के पूरे रघुवंश के दूसरे सर्ग में उपजाति छंद आएगा और लास्ट में एक भिन्न प्रहर्षणी शायद या मालिनी, इस दूसरे सर्ग के अंत में शायद मालिनी आएगा। मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, ऐसा उनका ये है। क्या है? लक्षण। तो हमने पहले श्लोक में क्या देखा कि अभी दिलीप जी जो हैं उन्होंने वशिष्ठाश्रम में रात बिताई और उसके बाद अभी उन्होंने क्या किया? धेनुहु मुमोच, उसने राजा वशिष्ठ जी की जो काऊ थी, जो गाय थी, उसको छोड़ा। He released that cow. And which kind of cow? उच्यते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। So he made his wife to do pujanam of that cow or worship that cow, and thereafter what he did, he allowed her calf to drink milk, and when he was satisfied with that, then he took that calf, he just tied up, and now he released that cow to go forest. Okay, so this was for first shloka. Now thereafter what is happening? So let's move to next. Chandas Tvameva Mata, whatever tune you know now, Indra Vajra, Karpura Gauram or Tvameva Mata, that tune you can apply here. Tvameva Mata cha tathaiva तस्याखुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया
मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। साधु श्लोकः। कालिदासः व्यावहारिक उदाहरणेन सर्वं प्रतिपादयति। सः सः किं वदति, यथा प्राचीनकाले स्मृति मुख्या आसीत्, नाम वेद प्रामाण्यं मुख्यं, ततः अनन्तरं स्मृति प्रामाण्यम् इति आसीत्। किमर्थम् एवं वर्तते? उच्यते स्मृतिः श्रुतेः यः अर्थः अस्ति तम् अर्थं पालयति। Now the smritis, Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, Parashar Smriti, etc., they came later and they are based on Vedas. So everything they follow Shruti. The basic idea is they follow Shruti. So Shruti is Param Pramana, then later comes Smriti Pramana. Then there are some, whenever there is aparadha, etc., we have to look at Shruti. Thereafter Smriti, then Shishta Achara, others people how they behave, and if that is also not possible, see Atma Pramana, and how you feel. That is how they used to do Nirnay, etc. So now Shrutehe Artham Smriti iva Anvagachat, as Smriti follows Shruti in the similar way Sudakshina followed that cow. So that is the basic idea. So now see, Apamsulanam Dhuri Kirtaniya. Pamsula means actually doshavati, yatra doshaha bhavanti. Sa doshana yukta. Naam atra दोष शब्देन किं, स्वैरिणी इति एकः महिलानां प्रकारः भवति। या यथा इच्छा भवति तथा अनुवर्तनं कुर्वन्ति, सा स्वैरिणी इति उच्यते। नाम पतिव्रता न अप्रतिव्रता इति वदामः खलु। सा पांसवः अथवा पांसुला इत्यस्य अर्थः भवति स्वैरिणी स्त्री। किंतु एषा सुदक्षिणा कीदृशी आसीत्? अपांसुला आसीत्। अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया. She was great or greater among all ladies. Which kind of ladies? Among all pativratas. So this is how the meaning can be taken. Apamsulanam dhurikirtaniya. And how she was? मनुष्येश्वर धर्म पत्नी. मनुष्यस्य ईश्वरः मनुष्येश्वरः. कः समासः? तत्पुरुष. मुख्य पदमस्ति ईश्वर. केषाम् ईश्वरः? मनुष्याणाम् अथवा मनुष्यस्य ईश्वरः मनुष्येश्वरः. तस्य मनुष्येश्वरस्य नाम राज्ञः दिलीपस्य धर्मपत्नी का सुदक्षिणा. सा किं कृतवती? तस्याः नाम कामधेनोः अथवा नन्दिन्याः खुरन्यास पवित्र पांसुं मार्गम अन्वगच्छत्. She followed the path of that cow. But which kind of path? Khuranyas pavitra pamsu. Again, pamsu here can be taken as dhuli, or it should be taken as dhuli. So that marga where there is a dhulikana, and how they came out. So they say khuranyasa. khur ityस्य कृते शब्दः hoop iti vartate. Hoop, by when she was walking, because of her hoops there was dhulikana arise, and that path was followed by Sudakshina. So that is the meaning. Now here actually apamsula and pamsula, both words are used. Apamsula means here apamsula, pamsu iti shabdasya dosha iti artah, atra pamsu iti shabdasya dhulikana iti artah. Apamsulanam धुरिकीर्तनीया सा सुदक्षिणा, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी सा सुदक्षिणा, मार्गम अन्वगच्छत्. That is the main sentence.
And which kind of marga? Kuranyasa pavitra pamsum. How she श्रुतेः अर्थम इव स्मृतिः अन्वगच्छति, यथा स्मृतिः श्रुतेः पार्थम श्रुतेः अर्थम अनुगच्छति तथैव एषापि इति अर्थ. So is मनुष्येश्वर is अव्ययी भाव, you say? न मनुष्येश्वरः इति तत्पुरुषः. पुनः मनुष्येश्वर धर्मपत्नी, मनुष्येश्वरस्य धर्मपत्नी पुनः तत्पुरुष. Now if there are many words, we have to break into, first we have to get manushya plus ishvara, manusheshvara. What would be the samasa? We have to identify. ईश्वर शब्द मतलब स्वामी है. किनका स्वामी? यदि ऐसा प्रश्न करते हैं, यदि पिछले वाले पद में षष्ठी दिखाई दे रहे तो वो षष्ठी तत्पुरुष है ना, तो ये षष्ठी तत्पुरुष मिल गया हमें. उसके बाद धर्मपत्नी, किसकी धर्मपत्नी? फिर से मनुष्येश्वरस्य धर्मपत्नी, तो वहां भी षष्ठी मिल गई. उत्तर पद प्रधान है तो तत्पुरुष हो जाएगा. ठीक है. संजीवनी टीकां पश्यामः. पांसवः दोषाः, दोषाः आसाम सन्ति इति पांसुलाः. जिसमें दोष रहते हैं उसको पांसुल बोलते हैं, या बहुवचन कर देंगे पांसुल, पांसुलाः. नाम किम? स्वैरिण्यः, स्वैरिणी पांसुला इति अमरः. उसके बाद वहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ उसके बारे में थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट बोलते हैं. सिद्धादिभ्यश्च इति लच् प्रत्यय, सिद्धादिगण विशेषः वर्तते, तत्र लच् प्रत्ययस्य उपयोगः भवति. तेन साधितः अयं पांसुल, वस्तुतः पांसु शब्द, लकारः कुतः आगतः? लच् प्रत्ययेन लकारः आगतः. पांसुलः, पांसुलाः इति कुर्मः. अपांसुलानां पतिव्रतानां, अपांसुल इत्यस्य अर्थः कृतः वर्तते पतिव्रता. पतिव्रतानां धूरि, धूरि नाम अग्रे, कीर्तनीया, परिगणनीया, she should be counted in as first. Agre means it can be taken as first. Kirtaniya, she can be counted, she can be post, उसको रखा जाना चाहिए. ऐसी कौन? सुदक्षिणा. और भी एक विशेषण देते हैं, मनुष्येश्वर धर्मपत्नी. सरलम अस्ति इति कृत्वा तस्य किमपि न दत्तम. खुरन्यासैः पवित्राः पांसवः यस्य तं मार्गं, कीदृशं मार्गं? सः मार्गः यः पांसुभिः पवित्रः जातः. किन्तु पांसवः कुतः आगताः? उच्यते खुरन्यासैः. खुरन्यासैः, धेनोः खुरन्यासैः पवित्राः पांसवः. So now that Dhulikana is also pavitra because it is rising, they are rising from that cow's hoof, right? So that kind of marga, that Sudakshina Anvagachat. And now example is given as, Udharanam Upma is given as, Shrutehe Artham Smritihi Iva Anvagachat iti. Astu. Pamsu ityasya krite uchyate Renuhu. द्वयोः स्त्रीणां धूलिः. अत्र पांसु न द्वयोः रजः. मया एतद् द्रष्टव्यं, तस्य स्त्रियां धूलिः. अच्छा, रेणुः द्वयोः, स्त्रियां धूलिः, पांसु न. अयं श्लोकः मया द्रष्टव्यः, तस्य अर्थः कथम् अस्ति इति अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि. अमरकोशे वर्तते. तस्याः धेनोः मार्गम् अन्वगच्छत्. अत्र क्रियापदं स्थापयितुं शक्यते. उदाहरणम् उच्यते, यथा श्रुतेः अर्थम् इव. अत्रापि ब्लू करणीयम् आसीत्. अन्वगच्छत्, अनुसृतवती. उच्यते यथा स्मृतिः श्रुति क्षुण्णमेव अर्थम अनुसरति. अत्र क्षुण्ण नाम मार्गम. श्रुति मार्गम एव अनुसरति यथा, तथा सा दक्षिणा, सुदक्षिणा अपि गोखूर क्षुण्णमेव मार्गम अनुससार इति अर्थः. उच्यते, धर्मपत्नी इत्यत्र अश्वघासादिवत्
तादर्थे षष्ठीसमासः कृतः प्रकृतिविकारभावात्। पांशुलपथप्रवृत्तौ अपि अपंसलानाम् इति विरोधालङ्कारः। अत्र उपमा अलङ्कारः अपि अस्ति, इव शब्दः अस्ति इति कृत्वा उपमा अलङ्कारः, तथा विरोधालङ्कारः अपि अस्ति। विरोधालङ्कारः कथम् उच्यते? मार्गः कीदृशः वर्तते? धूलयुक्त नाम पांशुयुक्तः वर्तते। नाम यः कोऽपि पांशुलमार्गे गच्छति, दोषयुक्त नाम धूलि मार्गेण गच्छति, स पांशुलः, स मनुष्यः पांशुलः भवेत्, किन्तु सा न पांशुला। कस्मात्? सा पवित्र वर्तते खलु, सा पतिव्रता। मतलब मार्ग में चलते चलते एक्चुअली जो धूलिकण से युक्त मार्ग होता है, वो धूलिकण से, यदि धूलिकण मेरे ऊपर आकर बैठते हैं या उसके ऊपर आकर के बैठते हैं, तो उसको क्या कहे जाएगा? क्या कहा जाएगा? पांशुला उसको कहा जाएगा। लेकिन वो पांशुला नहीं थी, वो कैसी थी? अपांशुला थी। तो उन्होंने पद ऐसे यूज किए, मार्ग में यद्यपि धूलिकण है लेकिन तभी भी वो कैसी थी? अपांशुला थी। इसलिए उन्होंने विरोधालंकार यहाँ दिखाया। सॉरी, जब आप वो धर्म पत्नी कुछ बोल रहे थे ना, तो बीच में ऑडियो चला गया था, वो आप वो वाला सेंटेंस फिर से समझा देंगे? लास्ट धर्म, हाँ, सेकंड लास्ट जो है, धर्म पत्नी त्यर्त्रा। तत्र विशिष्टं किमपि न, षष्ठी तत्पुरुषः यथा मया पूर्वम् उक्तं, षष्ठी तत्पुरुष समास कैसे है उसके लिए वो बोलते हैं, अश्वघासादि उदाहरण होता है उस षष्ठी तत्पुरुष का, वैसे ही ये भी मनुष्येश्वरस्य धर्मपत्नी ये षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, उससे ऐसा उन्होंने यहाँ बताया। ओह आई सी, ओके, थैंक यू। ठीक है, और एक बार सरल सरल अर्थ बता देता हूँ। अपांशुलानाम मतलब जो पतिव्रता है, जो दोष रहित स्त्री जो है, उन स्त्रियों में धुरी कीर्तनी, या धुरी मतलब प्रथम अग्रगण्य स्त्री है, अग्रगण्य है, मतलब जो पतिव्रताओं में भी पतिव्रता है, श्रेष्ठ पतिव्रता है, ऐसा अर्थ। और कैसी है? मनुष्येश्वरस्य मतलब राजा, जो मनुष्येश्वर का अर्थ होता है राजा, उस राजा की वो क्या थी? धर्म पत्नी थी। तस्याह मतलब उस धेनु का, खुरन्यास पवित्र पांसुम मतलब ऐसा मार्ग जिस मार्ग में धूलिकण पवित्र गाय के खुर से पवित्र होकर के उठे हैं, ऐसे मार्ग का अनुसरण उसने किया। तो एक क्रियापद यहां भी जा सकता है, हाँ, और बाद में यहां भी लगा सकते हैं, श्रुते है अर्थम स्मृति यथा अनुगच्छति तथा, ऐसा अर्थ हो। जैसा श्रुति के अर्थ को स्मृति फॉलो करती है, वैसे सुदक्षिणा ने उस मार्ग का अनुसरण किया। आगे का श्लोक है, निवर्त्य राजा दयितां दयालुः तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुस्समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोत्रम्। इति अलग अलग ट्यून हो सकती है, मुझे अभी जो दिमाग में आई मैंने वो वाले पिकअप कर लिया। सरलम अन्वयम पश्यन्तु। दयालुः, दयालुः दया अस्य अस्ति इति दयालुः, जो दयावान है। यशोभिः सुरभिः इति एकं पदं कुर्मः। यशोभिः सुरभिः, सुरभि का अर्थ होता है मनोहर, मनोज्ञ, ऐसा उन्होंने कमेंट्री में दिया है। ठीक है, यहाँ सुरभि का अर्थ कामधेनु की पुत्री वगैरह नहीं करना, हाँ, यहाँ सुरभि का अर्थ है मनोज्ञ, ये राजा का विशेषण है। ठीक है, लेकिन कैसा मनोज्ञ? यशोभिः, यश के कारण वो मनोहर है, अपने खुद के यश को मन में रखते हुए उसके यश की, उसकी कीर्ति का श्रवण यदि करे तो वो राजा मनोहर लगता है। अभी मेरी हिंदी भी अड़क रही है। हाँ, यशोभिः सुरभिः, फिर से उसके लिए शब्द आया राजा। हाँ, सह राजा, राजा इति विशेष्य पदम, दयालु इति विशेषण पदम, यशोभिः सुरभिः इति विशेषण पदम। सह राजा ताम दयिताम निवर्त्य, ताम नाम अधुना she was following the path, and in previous sarga it was said that she should go up to the boundary of that ashrama, Vasishtha ashrama. Now that boundary has come. Now Raja had asked her
to, return back to the ashram. So tam dayitam sudakshinam nivartya. He asked her to return. So then what he did? Saurabhim. Which kind of Saurabhi? Here Saurabhi Nama, it can be taken as the apatya of Surabhi Kamadhenu. Means Saurabhi means Nandini. Surabhehe apatyam stri Saurabheyi. Tam Saurabheyim tam gam tam dhenum sahajugopa. Jugopa, he protected. He protected that cow. Means what? He followed, he was behind that cow to protect her. So this is how the shloka goes. But which kind of cow? Payodhari bhuta chatus samudram. Vastutah, this visheshanam can go with Prithvi also and cow also. How? So here payah, payas ityasya artha bhavati either dugdham or jalam. So paya can be taken as jalam for a little bit of time. Payodhari नाम किम यया पयः नाम जलम धृतं वर्तते, सा पृथ्वी भवति, पृथ्वी या जलम धृत्वा स्थापयति. पयोधरी, पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम, as though all four samudras she has kept, she has hold. So that is called prithvim. Tam prithvim saha jugopa, that is also meaning, but here we should take as he protected that cow. So let's go towards cow. How that cow is? As though all four samudras milk has kept in his, in her, what word I can use? In payodhara, actually payodhara means stana. Asyaha dhenoho. Is there any another word for that? Okay, as it was protecting the earth itself, transformed into the cow. No, this is not the meaning. Here it is. Whose milk, the four oceans turned. Whose milk exceeded in quantity the waters of the four seas. So that is how the meaning has taken. Let's see Mallinatha, then I will be able to explain more. Avinashji, I have a question about Yashobhihi and Surabhihi. Is that like Tritiya Vibhakti? Yashobhihi and Vibhakti. Yashobhihi is... but Surabhihi... Sorry, you cut off. Sorry, you cut off. What did you say, Yashobhihi? Yashobhihi is Tritiya and Surabhihi is Prathama. He was Manodnya, Manohar, so Prathama Vibhakti. But by what? Yashobhihi, Kirtivihi, iti artha. Okay, let's see Tika. Dayaluhu, Dayaluhu Karunikah. Syad Dayaluhu Karunikah iti Amarkoshah. तत्र एकं सूत्रम् अधुना उच्यते अनेन मल्लिनाथेन पश्यन्तु. स्पृहि गृहि, तत्र बृहत् सूत्रम् अस्ति इति कृत्वा तेन स्पृहि गृहि इति स्थापितं. तत्र एकः प्रत्ययः उपयुज्यते, आलूच्. आलूच् इति प्रत्ययः, आलू इति प्रत्ययः अस्ति. सो कुत्रापि उपयोक्तुं शक्यते. यथा स्पृह, स्पृह, स्पृहालू, स्पृहा, स्पृहां नाम इच्छति इति, स्पृहालू. अग्रिमः अस्ति गृह, गृहालू, दयालु, कृपालु. अत्र सर्व आलुच् प्रत्ययः उपयुज्यते. दयालु, कृपालु, स्पृहालु इत्यादिकं सर्वं. दयालु इत्यत्र आलुच् प्रत्ययः उपयुक्तः, तेन अत्र कथितः. तस्य अर्थः कः? कारुणिकः इति अमरकोश अपि कोट् कृतं वर्तते. अग्रे उच्यते यशोभिः सुरभिः. यशोभिः सुरभिः नाम किं? मनोज्ञः. सुरभिः इत्यस्य मनोज्ञः अर्थः कुतः लब्धः? उच्यते सुरभिः स्यात् मनोज्ञे इति विश्वकोशः. मनोज्ञे अर्थे सुरभिः इति शब्दः उपयुज्यते इति तस्य प्रतिपादयति. ततः उच्यते राजा, तादृशः दयालु राजा, मनोज्ञ राजा, तां दयितां, दयितां नाम सुदक्षिणां निवर्त्य,
he asked her to go back. And Saurabheyim Kamadhenu Sutam Nandinim Jugopa Rakshitavan. He protected. Now in between there are some upamas. So let's see what kind of upama he used. Dharanti iti dharaha. Those who hold is called dharaha. Those who hold are called dharaha. Bahuvachan. Pachadyat नाम पचादि अच प्रत्यय तत्र उपयुज्यते धृ इत्यस्मात् धातोः धराः इति रूपं साध्यते कृदंत विषय कृदंत प्रत्यय वहां यूज करके धराः ऐसा शब्द उन्होंने बनाया ठीक है केशाम धराः उच्यते पयसाम धराः पयोधराः नाम किं स्तनाः दुग्धं धरन्ति इति पयोधराः सो कामधेनुः स्तनाः स्त्री स्तनादौ पयोधरौ इति अमरः अयं शब्दः स्त्री स्तनार्थमपि उपयुज्यते इति अमरकोशे उच्यते अपयोधराः पयोधराः संपद्यमानाः पयोधरीभूता एक्चुअली दे आर नॉट बट they are thought of like that. Actually there is a type of samasa ashuklam shuklikritya. If there that is not white, then if we have made that is white, then that kind of samasa will be kugati samasa. There is a type of samasa. हम पढ़ेंगे वो भी अशुक्लम शुक्ली कृत्य पटपटा कृत्य वगैरह वगैरह ऐसे उसके उदाहरण आएंगे. हाँ, तो वैसे भी पयोधरी भूता वस्तुतः अपयोधराः किंतु पयोधर भूता संपद्यमाना पयोधरी भूता इति कुगति प्रादय समासः तत्र वर्तते. समासस्य पुनः भागः अस्माभिः एतावता सह प्रकारः न पठितः इति कृत्वा त्यजामः. कुगति प्रादय इति समासः इति उच्यते. पयोधरी भूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः ताम् पयोधरी भूता चत्वारः समुद्रा. They are now her all four oceans has become or they are collected into her what is that called, like udder, they call it udder. that was that word I was looking for in her udder. उसमें ना आपके जो ट्रांसलेशन में टीट्स लिखा हुआ है TEATS the last word. I think if you use the word udders it makes much, I mean it is very clear to everybody. Cows udders. Okay ji sheets. So that is the meaning. Tam kamadhenum jugopa. So that this was the samasta pada again. अनेकमन्य पदार्थे इति अनेक पद ग्रहण सामर्थ्य त्रिपदो बहुव्रीहि. नाम बहुव्रीहि समासः अस्ति. वस्तुतः तत्र पदद्वयं तु भवति एव. कुत्रचित् बहुपदानामपि बहूनां पदानामपि समासः भवति इति मया पूर्वम् उक्तमासीत्. तस्य कृते सूत्रमपि अस्ति. अनेकमन्य पदार्थे बहुव्रीहि समासस्य अयं प्रकारः वर्तते. त्रिपद बहुव्रीहि वर्तते. पदत्रयम् अस्ति. पयोधर पयोधरीभूत चतुस्समुद्रम. There is a dvigu also in between. Gorupadharam urvim iva jugopa. यथा पृथ्वीं स रक्षति स्म तथा गोरूपधराम पृथ्वीं इव गाम जुगोप. ऐसा अर्थ है. उर्वी का अर्थ पृथ्वी है. पृथ्वी के समान उन्होंने उसकी रक्षा की. अभी दो विशेषण उन्होंने कामधेनु के लिए यूज किए, नंदिनी के लिए यूज किए. तो उसके लिए थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देते हैं. भूरक्षण प्रयत्नेन इव ररक्ष. यथा पृथ्व्याः रक्षणं क्रियते तथैव सः गां ररक्ष इति अर्थः. धेनुपक्षे पयसा दुग्धेन, पयसा नाम दुग्धेन अधरीभूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः सा तथोक्ताम्. दुग्ध तिरस्कृत सागराम इत्यर्थः. नाम दुग्धेन सागराः अपि तिरस्कृताः. तस्याः दुग्धं पवित्रमासीत्. तेन पवित्रेण दुग्धेन समुद्राः अपि समुद्रमपि पावयति. समुद्रः अपि पावयति, पवित्रं करोति. किन्तु अस्याः दुग्धम् इतोपि समुद्र अपेक्षया अपि पवित्रम् इति कृत्वा सा किं कृतवती, सागरमपि तिरस्कृतवती स्वस्य दुग्धेन इत्यर्थः. तादृशीं कामधेनुं
राजा जुगोप इत्यर्थः। अत्र निमेषत्रयमस्ति, पश्यामः एतदपि। व्रताय तेनानुचरेण धेनोर्निषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। पृष्टः आसीत् कामधेनोः सेवा कथं करणीया इति वसिष्ठेन उक्तम् आसीत्। यदा सा जलं पिबति तदा भवान् अपि जलं पिबतु, यदा सा उपविशति तदा भवान् अपि उपविशतु इति उक्तम् आसीत्। दिलीपः पालयति वा तथा? तस्य कृते अयं श्लोकः। व्रताय व्रतार्थं व्रतस्य कृते धेनोः नन्दिन्याः अनुचरेण तेन शेषः अपि अनुयायी वर्ग निषेधी। He asked his army or his परिचर सेवक किंकर to go back. He was not, for some time they were following king, but later king asked, Raja Dilip asked to go back. Now, anucharena. Why? Because vratartham ekaki avashyakam asit iti krutva. To follow vratam, he asked them to go back. Anucharena tena sheshaha api anuyayi vargaha neshedhi nivartatye. न च तस्य शरीररक्षा अन्यतः मनोः प्रसूति स्ववीर्यगुप्ता। तस्य शरीररक्षा अन्यतः न क्रियते स्म। Means what? He himself was able to protect himself. Even though there are no parichara, but he was sakshama, he was arahah, samartah to protect himself. And why? What is the reason behind that? मनोः प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता। मनोः प्रसूति नाम मनु इत्यस्य वंशे जाताः ये राजानः सन्ति, दे आर स्ववीर्य गुप्ता। स्वशक्त्या ते स्वस्य रक्षणं कुर्वन्ति स्म इति अर्थः। स्ववीर्य गुप्ता। तो तस्य विषये अधुना पश्यामः। लघु अस्ति बहु। व्रताय व्रतः नाम धेनुपालनम एव व्रतम, तस्य रक्षा एव तस्याः रक्षा एव व्रतम आसीत्। व्रताय धेनोः अनुचरेण न तु जीवनाय, व्रताय न तु जीवनाय इति अर्थः। तेन दिलीपेन शेषः अवशिष्टः अपि अनुयायी वर्गः अनुचर वर्गः न्यषेधि निवर्तितवान् अथवा निवर्तितः। शेषत्वं सुदक्षिणापेक्षया, वस्तुतः सुदक्षिणा अपि निवर्तिता एव। कथं तर्हि आत्मरक्षणम् अतः आह। इफ देयर आर नो परिचर वर्ग, देन हाउ ही प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ। उच्यते न च तस्य शरीररक्षा अन्यतः। तस्य दिलीपस्य शरीररक्षा शरीर रक्षणम् अन्यतः नाम अन्यन्तरात्, पुरुषात् पुरुषान्तरात् न। मीन्स व्हाट? He himself was protecting him. Why? Because